Hello everyone, welcome to my YouTube channel AV Classes. So this is the last lecture of diffraction, that is the width of central and secondary maxima. Now as we know, when a light passes through a small aperture or obstacle, then the light gets bent down and is spread out in the direction of its geometrical shadow. Okay. Now from the single slit experiment, we obtained the diffraction fringes, that is the successive maxima and minima are occur. The intensity of central fringe is maximum, while the intensity gets successively decreases as we move away from this center. Now what is the meaning of this width of central maximum? See, we obtain a bright fringe at center, okay, and from single slit experiment we obtain the path difference in terms of this angle, that is this path difference is equal to a sine theta. Okay. Now we calculate the path difference in terms of this angle. This angle is the amount of bending of this light rays so that the light has to reach at a given point P. Okay. Now this width of central maxima measure the spreadness of this light which falls on this center. Okay, that is this beta naught distance. Now how can you simply calculate it? See, this width is nothing but the difference between the distance of first dark fringe on either side of central maxima. इसका डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बना है और इधर का जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बना है उसके बीच का ही डिस्टेंस होगा. तो डार्क फ्रिंज बनने के लिए कंडीशंस क्या होती है फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए? ए साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा. नाउ थीटा यहाँ पे काफी स्मॉल होता है तो हम ए को ए थीटा लिख देते हैं. देन थीटा इज व्हाट? लैम्डा बाई. दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. मतलब यहाँ से फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो दोनों साइड है उनका एंगुलर विड्थ क्या है, एक साइड का भी बताया है. टोटल बताने के लिए इधर भी थीटा है इधर भी थीटा है. देन जो एंगुलर विड्थ होगा, एंगुलर विड्थ होगा, इट इज नथिंग बट 2 थीटा, डबल होगा ना 2 थीटा, जो कि कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ए. नाउ दिस इज द एंगुलर विड्थ. now we obtain this angle. Now we have this distance, so we can easily calculate this distance. How? Angle is equal to arc upon radius. What is the angle? 2 theta. Arc is what? This beta naught, and radius is what? This distance d. So beta naught is 2 theta into d, or beta naught is equal to, put the value of 2 theta from here, we get 2d lambda upon a. So this is the linear width of central maxima, that is this distance. Now if we try to find out the distance of nth maxima, linear width of nth maxima, then it's nothing but, see, then it's nothing but, see, we have the angular separation of lambda by a. This is the first dark fringe. second dark fringe का क्या हो जाएगा? 2 lambda by a. तीसरे का 3 lambda by a. ऐसे ही nth का अगर लिखेंगे तो n lambda by a हम लिख सकते हैं ना. तो nth मैक्सिमा का विड्थ क्या होगा? वो कुछ नहीं, बस n और n प्लस 1th का डिफरेंस हो जाएगा. जो एंगुलर सेपरेशन है n का और n प्लस 1th का, वही तो हमें दे रहा है विड्थ. ये मैक्सिमा है, इसके साइड में मिनिमा बन रहा है तो उसका हमें पोजीशन फाइंड करना है, उनको डिफरेंस कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? उस मैक्सिमा का विड्थ मिल जाएगा. देन थीटा n is this angle, then theta n plus 1 is what? n plus 1 into lambda by a. So theta nth is what? Subtract this from this, then we get n plus 1 lambda by a minus n lambda by a. This is nothing but lambda, okay, lambda by a. Okay, then this is the angular separation. Then linear width is what? Let's say linear width is d beta. Then multiply this distance to this value, we get linear width, so we get lambda d upon a. See,
The linear width of central maxima is what? Beta na 2d lambda upon a. While the linear width of nth maxima or secondary maxima is lambda d upon a. It means that it is 2 times the linear width of secondary maxima. Okay. Now why is it happen? Because the intensity gate successively decreases as we move away from the center. So this is all about the width of linear and secondary maxima. Width of central maxima is this value 2d lambda upon a, and width of secondary maxima is lambda d upon a. One thing which has to note down here is that this linear width is inversely proportional to the slit width. अगर slit width ज़्यादा होगा, linear width separation उतना ही कम होगा. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिफ्रेक्शन एक प्रिसाइज होने के लिए जो साइज ऑफ अपर्चर है और जो वेवलेंथ हम लाइट यूज कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए. तो लाइट का वेवलेंथ कम होता है जिसकी वजह से जो अपर्चर का साइज है वो कम होना चाहिए. लेकिन जैसे ही अपर्चर का साइज बढ़ाओगे ये डिफ्रेक्शन पैटर्न प्रिसाइज नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये जो विड्थ है या स्प्रेडनेस है वो कम होता जाएगा. ठीक है ना. सी the next topic is what? The next topic is the validity of ray optics. Next topic is validity of ray optics. Now, what is the basic difference between ray optics and wave optics? In ray optics, we have a study about the light travel in straight path. Okay, rectilinear propagation of light. But in wave optics, we are normally study about the wave front, that is spreadness of light. So क्या ऐसा कुछ कंडीशंस है जिसमें वेव ऑप्टिक्स के कुछ कंडीशंस अगर हम इम्पोज करें तो वो रे ऑप्टिक्स बन जाएगा? वेव ऑप्टिक्स में सिंपली क्या हो रहा है, लाइट का स्प्रेडनेस हो रहा है, उसको कम करना है. तो ऐसा कुछ कंडीशंस है जिससे वो चीज कम हो सकती है. देखो अभी मैंने बताया कि जो एंगुलर सेपरेशन है थीटा का वो लैम्डा बाई ए के बराबर होता है. ये एंगुलर सेपरेशन क्या बताता है? स्प्रेडनेस ही तो बताता है. ठीक है, मान लो कि एक्स डिस्टेंस पे एट एक्स डिस्टेंस पे क्या बन रहा है हमारा, एक मैक्सिमा मिल रहा है. तो उसका विड्थ कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू सिंपली डी लैम्डा अपॉन डी से बस मल्टीप्लाई करना होता है. डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. डी लैम्डा अपॉन ए. नाउ if we if the size of this this position of this maxima is equal to the aperture size x is equal to a, अगर ये साइज इसके बराबर हो जाए तो उस समय जो डिस्टेंस होगा, अब बराबर कैसे होगा? कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी ना. ये स्लिट है और ये स्क्रीन है. x इक्वल टू ए कब होगा? या तो हम इस स्क्रीन को इसके पास या दूर ले जाए तो हम देखेंगे. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर. ठीक है, हम इस स्क्रीन को इसके पास या दूर ले जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें जो विड्थ है उस मैक्सिमा का जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो अपर्चर के साइज के बराबर हो जाए. ठीक है, तो उस डिस्टेंस पे जो कि स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस. ठीक है, सो एट x इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी एफ. वैल्यू यहाँ पर रखो, x इक्वल टू कितना है? a डी एफ लैम्डा अपॉन a, then df is what? a square by lambda. What does it means? That if the distance between this screen and slit is less than this df, if d is less than df, अब एक बात बताओ, ये स्लिट है और ये स्क्रीन है. ये स्क्रीन जितना इसके पास रहेगा उतनी स्प्रेडनेस कम होगी. स्प्रेडनेस ज्यादा कब होगी? जो इसको इतना दूर करोगे उतना ज्यादा स्प्रेड करेगा लाइट. हमें रे ऑप्टिक्स के वैलिडेशन के लिए क्या करना है? इसका स्प्रेडनेस कम कराना है, उसको कैसे भी स्ट्रेट पाथ में मूव कराना है लाइट को. तो इसको क्या करेंगे? और नजदीक ले आएंगे. तो डिस्टेंस इसको कम करना पड़ेगा ना. वही कंडीशन है. तो अगर d लेस देन डी एफ हो गया देन इसका मतलब क्या हुआ कि d इज लेस देन a स्क्वायर बाई लैम्डा, देन a मस्ट बी ग्रेटर देन रूट लैम्डा d. और इस रूट लैम्डा d को हम कहते हैं फ्रेजनल जोन. इसको कहते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस. फ्रेजनल डिस्टेंस और इसको कहते हैं फ्रेजनल जोन. Fresnel zone. What does it means? That if
the distance between the slit and screen get reduces by amount or a limit which is called Fresnel distance. इससे कम हो जाए तो रे ऑप्टिक्स वैलिड है, या जो अपर्चर का साइज है वो इससे बड़ा होना चाहिए तो हमारा रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। नाउ डिफ्रैक्शन चैप्टर खत्म हो गया है। नाउ in next lecture we will going to discuss about the polarization of light. Thank you.